वेलकम बैक। इससे पहले एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में, तो वो आपने देखा होगा। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है 10th क्लास के लिए। हाउ टू फाइंड द distance between the two coordinates. First of all, see here, this is a Cartesian plane, point A. अगर इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस अगर देखेंगे हम तो कितना है 1 2 3 यूनिट्स, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो देखेंगे तो 1 2 3 4 यूनिट्स। इस पॉइंट का पॉइंट बी का अगर डिस्टेंस देखना है तुमको एक्स एक्सिस से तो 1 यूनिट, और इस पॉइंट बी का डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से देखना है तो 1 2 3 4 5 यूनिट्स। बट दिस इज अ पॉइंट। इस पॉइंट का अगर ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है तो कैसे करेंगे इसको? वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर and join this point to the origin. Then this is the AO is the distance from the origin of this point. What is the distance? 4 units, and this distance is what? 1 2 3 units. So using Pythagoras theorem you can find the distance between origin and that point A. So what is Pythagoras theorem? O is the hypotenuse. O is square equal to AB square plus OB square. So AB is what? 3 is square, and OB is what? 4. Three square 9, 4 square 16, 16 plus 9 is 25. OA square equal to 25. By taking square root, then we get square root of 25 is 5. So the distance between the origin and point A is what? 5 units. But if you have to find the distance between any point, suppose this is one of the point, this is x1 y1, and this is another point that is x2 y2. So how can we find the between point A and B? So we have to draw the perpendicular. You have to consider this point. Suppose this point is a C. So x coordinate, this is the x coordinate, this is same, that is x2, and the y coordinate of this point C is same as y1, because this x2 this x2 is same, and for C the y1 is same,
देखो यहाँ पर 3 है, तो ये 3 ही रहेगा यहाँ पर। और इसका x2 है तो x2 ही रहेगा इधर, ये 5 है तो ये 5 ही रहेगा इधर। अब जैसे तुमको फाइंड करना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस, सो व्हाट वी हैव टू डू, अपने को फिर से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। सो इन ट्राइंगल ABC using Pythagoras theorem, AB is the hypotenuse, so AB square equal to AC square plus BC square. AC is what? कैसे निकालेंगे AC? Here the y1 same, so x2 minus x1, अगर ये डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो x2 में से x1 फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, दैट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, एंड y1 माइनस y1 0। BC अगर फाइंड आउट करना है तो x2 माइनस x2 इज 0, दैट इज y2 माइनस y1 और y1 माइनस y2, विच एवर इज ग्रेटर, सो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। By taking the square root of both sides, then we get AB equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and this is the required distance formula for finding the distance between any two points in a Cartesian plane. अगर तुमको कोई भी डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो तुम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द फार्मूला? x2 माइनस x1 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। This is the distance formula, and this is very important formula to find the distance between the two points. So I hope you understood very well.